Hello, dear students. I am Shalaka Deshpande, Assistant Professor. I have done my Masters in Embedded System. Welcome to the first lecture on Java programming. So let me share the file with you. So let's get started with today's lecture. Okay. Today's lecture is Introduction to Java Programming. Okay. Now, since invention of computer, many programming approaches have been tried. These include techniques such as modular programming, structured programming. Now, various programming approaches are there. They are different. In modular programming, we divide a particular task into various subtasks, various problem statements, and find solution of those subtasks and integrate them. Okay, in structured program, we organize the program in such a manner that it is easy to understand and easy to execute. The primary motivation behind these approaches has been concerned to handle increasing complexity of program. Now, as the complexity of program is increasing as per the problems, so because of that, modular programming and structured programming developed. Structured programming proved to be powerful tool that enabled programmers to write complex program more easily. To write a complex program in a simple manner and easily understandable manner, we required structured programming. Now, what is object-oriented programming? Object-oriented programming is an approach to program, organize and develop code to eliminate some of the pitfalls of conventional programming methods by incorporating best of structured programming features. Program is organized in such a manner that conventional program is a bit more complex and lengthy, whereas a program which is using oops feature is very organized and it is eliminating the pitfalls of conventional programming methods. That's why most of the language are adopting oops feature. Languages that support OOP feature. Now let's see the languages which support the OOP feature. They are Smalltalk, Objective-C, C++, Ada, and Object Pascal. And Java is a pure object-oriented language. Okay, Java is a general-purpose object-oriented programming language developed by Sun Microsystems of USA in 1991. Java was developed by Sun Microsystems of USA in 1991 and originally called Oak by James Gosling, one of the inventors of language. James Gosling is the inventor of Java language. Java was designed for development of software for consumer electronic devices. Now, there are consumer electronic devices like TV, VCR, toaster, electronic machines. These hardware devices, how they work, there are software programs running inside these hardware. The integration of hardware and software make up the system. So to develop software for these electronic devices, Java was designed. So let's see the history of Java. In 1990, Sun Microsystem decided to develop special software that could be used to manipulate consumer electronic devices. So it was decided in 1990 to develop the software. In 1991, the team announced new language named Oak. Okay, so the team announced the name of language as Oak. Initially, the Java was called as Oak. Okay, in 1992, Green Project team by Sun demonstrated application of their language to control home appliances using handheld devices with tiny touch-sensitive screen. Now there was a Green Project team which developed the Java software. Okay, and what they did is they developed a few handheld devices like remote control to operate the home appliances. For example, we use remote to operate AC, we use remote to operate TV. Okay, so in this way, handheld device, with the help of handheld device, home appliances were operated with help of touch sensitive screen. In 1993, internet was introduced. WWW, that is World Wide Web, appeared on internet. Hence, Green Project came up with idea of developing web applets, tiny programs using Java that could run on all types of computers connected to internet. See, the internet was introduced in 1993s, and Green Project came up with idea of tiny programs. They are Java. They are called as Java applets, and they are different from normal Java programs. Okay, and they require special browser, Java web browser,
to run those applets. Okay, so in 1994, the team developed a web browser called Hot Java to locate and run applet programs on internet. As I told, internet programs, Java internet programs are called as web applets. And to run those web applets, we require a web browser called Hot Java, and that browser was developed in 1994. In 1995, Oak was named Java. Initially, Java was called as Oak, but since 1995, it was called as a Java. So, in 1996, Java establishes itself for general purpose object oriented programming. Sun releases Java Development Kit 1.0. So, in 1996, first version of Java software JDK 1.0 was released. 1997, Sun releases Java Development Kit 1.1. JDK 1.1 was released in 1997. 1998, Sun releases Java 2 with version 1.2 Software Development Kit. SDK 1.2 was released in 1998. In 1999, Sun releases Java 2 Platform Standard Edition and Enterprise Edition. Okay, in 2000, J2SE with SDK 1.3 was released. In 2002, J2SE with SDK 1.4 was released. So there are various versions which were released again as the time progressed, as a time elapsed. Software was developed and various versions of the firmware were released. Okay, J2SE with JDK 5.0 was released in 2004. In 2006, Java SE6 was released. In 2007, Java SE7 was released. Now we will see the example of a simple Java program. You can see it's a simple Java program to type hello world. All right. So here the name of class is beginning, and then we have public static void main. Inside that we have string args, then system.out.println hello world. This simple Java program prints hello world on the output screen. We will be just typing this program or copy pasting this program on Notepad and convert it into Java file, and we will obviously run it on the command prompt. Okay, execute it on the command prompt. Okay, and before doing this process, it is advisable, I advise you to download JDK software from Oracle official website. Okay, now first explanation, class beginning. You can see the first line here, class beginning. See, this is the first line, class beginning. Okay, so let's discuss this first line. What does that mean? Class beginning declares class, which is object oriented construct. This is the object oriented construct. In Java, everything is placed inside class. जो भी कंटेंट्स है जावा प्रोग्राम के, सब हम क्लास के अंदर फिट करते हैं. ठीक है. क्लास इज अ कीवर्ड एंड डिक्लेयर्स क्लास डेफिनेशन. क्लास क्या है? एक कीवर्ड है और वो क्लास का डेफिनेशन डिक्लेयर करता है. बिगिनिंग इज अ जावा आइडेंटिफायर दैट स्पेसिफाइज नेम ऑफ डिफाइंड क्लास. बिगिनिंग क्या है? क्लास का नाम है, उसे हम जावा आइडेंटिफायर भी बोलते हैं. बाद में ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस. Every class definition in Java begins with opening brace and ends with the closing brace. C programming की तरह ही हर एक Java program opening brace से start होता है और ending में closing brace होता है. ठीक है. Now public static void main string args. This defines the method main. Every Java program must include main method. अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? ये मेन मेथड को डिफाइन कर रहा है और हर एक जावा प्रोग्राम में मेन मेथड होना चाहिए. This is the starting point of interpreter. Interpreter program main method से interpret करना start करता है. Java program can have number of classes, but only one of them must include main method to initiate execution. जो हमारा Java program है, उसकी multiple classes हो सकती है, लेकिन एक ही class ऐसी होती है जिसके अंदर main method होती है और वहां से program execute होता है. फिर उसके बाद में हमने देखा कि main method के keywords है public, static, void, string args. एक एक करके हम उस keywords को देखेंगे. Public, keyword public is an access specifier that declares main method as unprotected. Public क्या है? एक access specifier है और वो क्या करता है? मेन मेथड को अनप्रोटेक्ट करता है, अनप्रोटेक्टेड डिक्लेयर करता है, मतलब दूसरी क्लासेस मेन मेथड एक्सेस कर सकती है. स्टैटिक, कीवर्ड स्टैटिक declares this method as a one that belongs to entire class.
ये स्टैटिक कीवर्ड जो है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि ये जो मेथड है पूरे क्लास को बिलोंग करती है, क्लास का छोटा सा पार्ट नहीं है, पूरे क्लास को बिलोंग करती है, ठीक है। फिर उसके बाद void, टाइप मॉडिफायर void which states main method does not return any value। void एक टाइप मॉडिफायर है जो ये इंडिकेट करता है कि जो मेन मेथड है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। string args, string args declaration of parameter args which contains array of object type string। args के बाद में हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, ये क्या है, पैरामीटर, डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर, मतलब क्या, जो भी अरे है, मतलब जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी हमारे मेन मेथड के अंदर वो आर्ग्स में स्टोर होती है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स उसमें स्टोर होते हैं। ओके, क्लियर। तो ये मीनिंग था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। और अभी एग्जीक्यूशन स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जीक्यूशन स्टेप है कंपाइलिंग सोर्स कोड इनटू बाइट कोड यूजिंग जावा सी कंपाइलर। जावा सी कंपाइलर की हेल्प से हम सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूटिंग बाइट कोड प्रोग्राम यूजिंग जावा इंटरप्रेटर। फिर जो बाइट कोड प्रोग्राम है वो इनपुट दिया जाता है जावा इंटरप्रेटर को, और जावा इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक कोड कॉपी पेस्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं सिंपल कोड है। क्लास बिगिनिंग, क्लास का नाम बिगिनिंग है, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिफाइन की है स्ट्रिंग आर्ग्स, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, ये एक कमांड है जो आर्ग्यूमेंट्स हेलो वर्ल्ड को टर्मिनल पे डिस्प्ले करेगी, तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अभी इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, सबसे पहले ओके इसको अभी क्लोज कर देती हूँ। आप एक टैब देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं cmd टाइप करूंगी। ओके, फिर उसके बाद में मैं कमांड टाइप करूंगी जावा सी, देन नेम ऑफ द फाइल, मेरी फाइल का जो नाम है वो मैं टाइप करूंगी, और जो क्लास का नाम है और फाइल का नाम है वो सेम होना चाहिए। सो जावा सी बिगिनिंग डॉट जावा, राइट। देन सेकंड, ये अभी कंपाइल हो चुका है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिगिनिंग डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है, बाइट कोड फाइल जनरेट हो गई है, आपने देखा होगा। ओके, फिर उसके बाद जावा, आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। ओके, मैंने थोड़ा इनलार्ज कर दिया है स्क्रीन को, हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से हमने पूरा कोड एग्जीक्यूट किया है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।